Dhamma Bodhipakkhiya Dhamma Sangham We worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the Dhamma. May this humble offering be accepted. It's Shanivar, so we have the opportunity to ask questions and have some discussion on whatever we have done in this week. 5 दिनों में जो चर्चाएं हुई हैं उसके बारे में और भी पूरे वासा पीरियड में जो हो उस किसी के बारे में भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. We can try to have some discussion on it. एक प्रश्न था मैं जी ऐसा था कि जो हम ले पीपल हैं गृहस्थी हैं तो गृहस्थ जीवन में हमारी तन्हा जो है वो होती रहती है नाउ एंड देन जी. और ये जो तन्हा है ये मान लीजिए कोई चीज अच्छी लगी और लगा घर के लिए ले जानी चाहिए और इससे घर में कहीं ना कहीं कोई सहूलियत मिल जाएगी किसी न किसी तरह से. हालांकि काम चल रहा था लेकिन फिर भी हमें ऐसी बात मन में आ जाती है और उसको हम कई बार ले भी लेते हैं और कई बार अगर काम ज्यादा लगे तो नहीं लेते, सोचते हैं आगे ले लेंगे किसी समय. तो अब ये है कि ये तन्हा होती है, कभी इसके प्रति ये कार्यान्वृत्ति हो जाती है जब हम इसके उसमें आ जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं ये चीज मुझे चाहिए, इसकी जरूरत है. और कई बार ये होता है कि क्योंकि अब थोड़ा इसमें काफी इसके प्रति जागरूकता है तो ये भी लगता है कि शायद हो सकता है इसके वगैरह भी काम चल जाए. तो अब ये है कि तन्हा तो आती है और लेकिन उपादान नहीं होता. और ये ऐसा भी है कि वो भयंकर के नहीं मुझे तो चाहिए ही इसके बगैर मेरा. तो दिस इज which I wanted to delve further and I then started reading सुमेधो and their cousin सुमेधो जी, और उनके मैंने जब वो विचार उसके बारे में पढ़े तो उनका मुझे ये पता लगा कि तन्हा जो है वो इतनी डेंजरस नहीं है जितना कि क्लिंगिंग विद दैट तन्हा इज मोर डेंजरस. तो मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाह रहा था कि व्हाट डू यू से. उपादान तो definitely means you have really grasped the desire, तो फिर वो ज्यादा कष्ट तो देगा ही. प्रश्न तो ये है कि क्या तन्हा हमको एक्सेप्टेबल है, वो प्रश्न है ना. प्रश्न ये है, वो प्रश्न. उपादान के बारे में कोई डाउट नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं. तन्हा के बारे में डाउट रहता है कि आती रहती है जाती रहती है, क्या फर्क पड़ता है. तो आप खुद ही जांच के देख लीजिए ना. वो ये तो ऐसी चीजें अनुभव की बात है तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होती. क्योंकि अगर तृष्णा जागी तो मन शांत रहा, बड़ा प्रसन्न रहा, तो देन इट इज वेलकम. नहीं रहा, मन में उथल पुथल हुई, तो देयर इज सम सफरिंग, isn't it? So we know from our own experience, we don't have to depend on anybody, not even Buddha. We know it directly. So we have to see whether, I mean, we can always say थोड़ा बहुत तो चलता है. Okay, चलता है तो ठीक है, it's okay. But that whether it is
desirable or not, we can check from our own experience. So आपको थोड़ा सजग रह के आप खुद ही देख, आपने खुद ही कहा प्रश्न उठा, ये करा जाए नहीं करा जाए, which means there was a dilemma, there was a question, then there was, I mean, what did happen? For example, मैं मार्केट गया, मैंने कुछ देखा, तो कुछ आंखों ने देखा और उसके प्रति एक अच्छी फीलिंग जागी कुछ चीज को देख के, है ना? ऐसा है उस अच्छी आप कुछ कहना चाहते हैं? कहिए। कि क्योंकि मैं स्पेशली गृहस्थियों के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी तो गृहस्थी की बात कर रहा हूँ भैया। वही मार्केट जाते हैं, भिक्षु लोग तो मार्केट जाते ही नहीं। They're not supposed to go at least. लेकिन बात यह है जी, गृहस्थियों में फर्क है। एक गृहस्थी है जो अपने साथ पुरानी पारवी लेके आगे बढ़ा है, और एक गृहस्थी है जिसका अभी शुरुआत है। तो उस तरह का फर्क भी है ना, तो एक कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। There are people who are born satisfied. I know such people. I have met so many of them. You are also one of them. So, but point is, there are people who are born satisfied. You know, they don't crave for anything in their life. They have been growing like that right from day one. तो अब क्या, हमें अकल बाद में आई, अब हमें अकल आ रही है इस उम्र में जब हम 70 पार हो गए। तो उसमें ये हो रहा है कि कभी कभी कोई ऐसी चीज जो हमको पसंद आती है, हम सोचते हैं कि होनी चाहिए हमारे पास, और मन ललायित होता है और हम उस पर फिर कार्यवाही करके उसको ले लेते हैं। अब मैं इसको ये, वो हमारे प्रसन्नता का कारण भी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हमने ले ली और हम उसमें कुछ हम अशांत हो गए और हमारे को लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा तो नहीं होता। हम ले लेते हैं और उसको फिर एंजॉय भी करते हैं। और एंजॉय का मतलब ऐसा नहीं है कि उसी में रत हैं या उसी में लिप्त हैं। जब उसका यूज है तो उसको यूज कर लिया, अदरवाइज नहीं। और उससे कोई अशांति नहीं हो रही मन में, या कोई कंपन, ऐसी कोई चीज नहीं पैदा हो रही, या कुछ ध्यान भी लग रहा है, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो मेरा कहने का है कि ये जो एज अ ले पर्सन जब हमारे को ये हो रहा है, इस वातावरण में जब हम जी रहे हैं, तो वो जो है अल्टीमेटली when I look at it, I feel it's okay. That's what I feel. Fine, if you feel okay, it's fine. No problem. Thank you. If it is okay, it is okay. Why should anybody else tell you कि ये okay है कि नहीं है? That we have to find out for ourselves. That is the way it should be, नहीं? We should ourselves find out if it is okay, it is okay. The issue is not of buying the thing or not buying the thing. That is not the issue. The issue is whether interaction with the external object is causing, there will definitely be some vedana, some feeling, and whether in response to that feeling I have reacted, or with response to that feeling I have responded with sati and panya. That's the only difference. बाकी सब तो ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? खरीदने ना खरीदने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि मेरे मन में क्या रिस्पॉन्स हुआ, एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपमेंट ऑफ द पाथ। हम तो वो चर्चा कर रहे हैं ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट इन द पाथ, आई वुड लाइक टू चेक कि दिस sensory interaction which happened, it created a feeling, and how did I respond to feeling? Did I respond with panya or did I respond with ignorance? That is the key, and I can check up that. By how I can check up? By knowing what is my state of the mind immediately thereafter. Now what I decide and what I do and how much I do is a later thing. That doesn't matter so much. We're not going to do any unwholesome action of any kind, really. So that's not a big deal. The issue is whether tanha is something which is desirable or not. That we can check on our own. ठीक है ना? तो आप खुद ही चेक करके देख सकते हैं and find out for yourself whatever is valid under a particular situation. Tanha can also be in the opposite direction. मुझे नहीं लेना है, घर में पत्नी कह रही है ये खरीदना, मुझे कहा नहीं खरीदना है, and then you create a big issue out of it. That could also be another kind of tanha. So it is a matter of just seeing it.
seeing it with as much clarity as possible, seeing it with sati and panya, is against getting carried away by ignorance. That is the dividing line जो हमको जितना हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऑनर कर पाएंगे, उतना हमारा चित्त शुद्धता की ओर चलता चला जाएगा. That is our main practice. Thank you. Thank you. Thank you. सर एक प्रश्न था. जी जी. जैसे हम क्रॉस लेग बैठे हैं और साधना कर रहे हैं, so can I take the help of some support like a support belt or something to keep the backbone straight, just to maintain the posture in a better way? So is it permissible? Nothing like at the level at which we are discussing sadhana and practicing, these things are not very crucial really. It depends. अगर आपकी कमर में दर्द है तो जरूर करिए. मैं तो कहूँगा अवश्य ही करिए. कमर में दर्द है, कमर में परेशानी हो रही है, तो you should take support. Why not? But if you are healthy, if you have everything is fine, you are young, then it's better to keep straight without support. Yeah, that's true sir. लेकिन वो सती चली जाती है, फिर वो झुक जाता है कमर, तो ऐसे में अगर वो बैकबोन में सपोर्ट रहता है. कमर झुक गया, सीधा कर लो, क्या हो गया? Doesn't matter. The posture by itself is not at the level at which you are practicing. I'm presuming we have practiced for many number of years. It doesn't matter. ये वैसे झुक गई, जब जैसे ही सजगता आई, अवेयरनेस हुई पोस्चर की, सीधा कर लो. क्या करना, तो प्राकृतिक परिस्थिति है. आपको पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, देन यू कैन मेक इट स्ट्रेट. Just to keep the posture straight, to tie up the body in certain contraption is not really needed. It's not necessary. The key importance should be given to awareness rather than to posture. It is important. आपको अगर ऐसे ही हो जाएंगे तो मुश्किल होगी. थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाए, सीधा कर लीजिए. That's also, then you are being aware of the posture. एरियापथ बब्बम में कहा जाता है, अवेयर ऑफ इट. खड़ा है कि बैठा है, आपको पता चलेगा कि मैं बैठा था, अब बैठे से लेटे की पोजीशन में जाने वाला हूँ, तो बीच में आ गया हूँ, तो सीधा हो जाता हूँ. मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है, and then he's lying on a bed, you can practice in that posture. or if he has to lie, जैसे जब मैं भी मार्च में हुआ था तो मुझे एक इंक्लिनेशन पे कहा गया बैठने को, लेटे रहने को, ठीक है लेटे. so you can practice in that posture. How does it matter? It doesn't matter. क्या होगा उससे? मेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, थोड़ी फ्लो ठीक से नहीं होगा. हाउ डज इट मैटर? सेंसेशंस नहीं मालूम पड़ेंगी, सो व्हाट? आई जस्ट बी अवेयर. नहीं मालूम पड़ रहे, आई बी ओके विद दैट अवेयरनेस. इट डजंट मीन दैट वी शुड बी केयरलेस अबाउट इट. आई एम ट्राइंग टू से इज वी शुड नॉट गिव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू इट. And in order to maintain the body straight, we try to put contraption. I don't think, I won't advise it, but if it's up to your personal choice, it doesn't matter either way. If you want to keep it, try it out and see. Yeah, मतलब if it helpful for the sadhana, जैसे सर मैं जब उधर आता था धम्मा रामा में, तो जो हमारे भिक्खु आते थे, उनको देखिए तो उनका पोस्चर इज सो इम्प्रेसिव. So you know, and they for a long time. It's not just for 15 minutes. They are there for 1.5 hours. So if it is helpful in any way, so can I? Because I have try it out. Sure, doesn't matter. Okay. Doesn't matter. But don't get overly concerned about the posture and forget about sati and panya. Sir, is it advisable to hear Dhamma talks or chantings when we do some other work? Because sitting and
we don't get in this fast-paced life little time to hear all those. So is it fine or? Yeah, I would say, considering these constraints, only thing is that one should be able to clearly put attention on it, no? If you can put. But if you're driving and listening a Dhamma talk, that can be quite a challenge. Huh? I mean, certain things which doesn't involve any mindful. It's okay. If you're doing a mechanical work, Yeah. that you can, yeah, why not? I would say respectfully we can sit and be aware that these are our constraints. What can we do? It's better to listen to that rather than let the mind wander here and there. But best is to be aware of what we are doing. That also is fine. Chantings are also fine. Oh, sure. But the whole idea is that it should be respectfully done, and one should be as much possible aware of what's going on, isn't it? So that we don't eventually become kind of use it like a background music to shut off noise, and and वो भी चल रहा है और हम कुछ और ही सोचे जा रहे हैं, अपना काम करे जा रहे हैं. If you're doing a mechanical work, fine, then your attention can be there. But if you are doing some other work which needs my attention thoroughly, then it's not advisable, and the work will suffer. एक डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए chanting makes sense. If you're a doctor, I'm just telling you. Sure, sir. Sure. Good. So there are no questions. हाँ बोलिए. सर ये सम्यक आजीविका के बारे में जो 7-8 वो जो अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक आजीविका को छोड़ करके बाकी सब में लाइक यूनिट चित्त समाधि वीर्य सारे चीजों का लाइक all aspects are taken care, but आजीविका में आजीविका is left out actually. कल आपने table I was seeing that, so there's a blanket statement कि जो वर्जित कर्म है उनको न करना. तो वर्जित कर्म क्या है वो उसने एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ, बट एट अदर प्लेसेस इट इज स्पेसिफाइड. वर्जित कर्म वो है बेसिकली जिससे कि मेरा कोई शील टूटे या मैं दूसरों के शील टूटने में मदद करूं. तो अगर मैं पशुओं की हत्या करके उनको मांस बेचता हूं, तो पशुओं को पालता हूं इसलिए कि लोग उसकी हत्या करके उनको बेचें, उसको मीट को बेचें, तो मैं हेल्पिंग अदर्स टू ब्रेक देयर शीला. मैं जहर का व्यापार करता हूँ, जहर पी खा के कोई ठीक तो हुआ नहीं. मैं वेपन्स का व्यापार करता हूँ, पिस्तौल बेचता हूँ, पिस्तौल से तो लोगों की हत्या ही होगी, कुछ सुधरेगा तो नहीं. या शराब बेचता हूँ, तो उससे जो भी पिएगा
मैं उसको शील तोड़ने में सहायक हो रहा हूँ। तो जैसे हम धम्मिका सूत्र में पढ़ते हैं ना कि मैं कोई शील तोड़ूंगा नहीं, कोई शील तोड़ने में दूसरों के सहायक नहीं होऊंगा, और कोई शील तोड़ रहा है तो मैं उसका अनुमोदन नहीं करूंगा। अनुमोदन। उस सेंस में आज सम्यक आजीविका बनाई गई है। तो इसलिए उनको इस कुछ आजीविका को हमारे दूसरे सूत्रों में, दूसरे कमेंट्रीज में मेंशन किया गया इस तरह से कि विल नॉट डू एनी सेल ऑफ एनिमल्स फॉर स्लॉटर और डू द स्लॉटर आवरसेल्व्स, बुचर नहीं बनेंगे, देन शराब नहीं बेचेंगे, जहर नहीं बेचेंगे, वेपन्स नहीं बेचेंगे, दिस काइंड ऑफ थिंग, स्लेव्स नहीं रखेंगे, स्लेव्स को नहीं बेचेंगे. So these are some of the things which are specified in the literature at various places. So you can always extend it in the modern context because things have changed. So you can see. No, so what I'm trying to ask is कि ये जो हम सम्यक आजीविका is more of your determination of not to do certain acts and do certain acts. That is true. That is true of everything. On every that is true of Shila, that is true of Samma Vacha, that is true of Samma Kammanto, true of abstaining from sexual misconduct, abstaining from intoxicating drinks. All of them are, in some sense, resolutions that I will not do this. Training the mind so that it will desist from doing such things. That's true of everything. और छोटा सा जो कि मेरे दिमाग में ऐसे कहीं पे मैंने सुना या पढ़ा था कि 3 प्रकार से आप किसी का, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कि अनुमोदन नहीं करेंगे और किसी के आप न चोरी करेंगे न करवाएंगे और न, so ये this has something specific sutta is there for this, जहाँ पर 3 प्रकार से आप you are giving some मतलब protection to others also, na, by following these shila you are protecting others as well. Yeah, so there is a sutta where it is mentioned that you are actually giving freedom to others. Yes, that's what freedom to others, that they can be assured that ये शील पालन करता है तो इसके पास जाने में कोई खतरा नहीं है, ये हमको मारेगा नहीं, हमको गाली नहीं देगा, in that way. So it gives a sense of fearlessness to people. So it's a kind of abhay which you give to others. Yes, abhay. क्या सर सूत्य का नाम मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा. You can check in access to website में अगर कीवर्ड डालोगे तो मिल जाएगा. Or I can search for you and let you know. I also do. Thank you, sir. Thank you. एक और आपसे प्रश्न करना था जी. ये जो एक जब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की और प्लस हम बात करें भुजंग सूत्र की, तो भुजंग सूत्र में सति और समाधि और इसके अलावा ये 2 चीजों के साथ साथ जो फिर वीर्य की और ये भी समझ में आती है बात की, जो 3 चीजें हैं जिसमें सद्दि, प्रीति और उपेक्षा, ये जो 3 चीजें हैं, ये भुजंग सूत्र में इसकी जो महिमा का गुणगान किया गया है, तो ये हाउ दे हेल्प वन टू, ये तो समझ में आता है कि चाहे इंसान बनने के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, बट ये क्या हमें इस साधना की राह में कैसे ये आगे ले जाएंगी, ये प्रीति, प्रसद्ति और उपेक्षा, ये तरह मैं समझना चाहता हूँ. जैसे कल मैंने सिलसिलेदार समझाने का प्रयास किया था कि these are the natural developments of the path. हम सती से शुरू करते हैं, मान लीजिए सती पठान कर रहे हैं साधना, क्योंकि सती पठान is supposed to be the nutriment for fulfillment of the 7 bhujangas. तो हम मान लीजिए काया के ऊपर शुरू करते हैं, सेम थिंग अप्लाइज टू वेदना एंड अदर्स. काया अनुपश्ना शुरू करते हैं तो वी आर डेवलपिंग सती बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी इन वेरियस वेज.
So when we do it, practice में we also start observing the arising and passing away of things and investigate the nature of experience. So then that investigation of the experience is the Dhamma Vichar. खासतौर पर जैसे 5 खंडों को अलग अलग तोड़ के देखते हैं, खंडों में भी देखते हैं कि रूप खंड में क्या हो रहा है, वेदना में क्या हो रहा है, संज्ञा में क्या हो रहा है. So that is from Sati we move on to Dhamma Vichar, natural progression of the practice. और जब ये करते हैं तो एंड इसमें मन लगने लगता है, लंबे समय तक ऐसा कर पाते हैं, तो स्वतः ही एक एंथुसियाज्म जागता है, वीर्य जागता है कि हमें ये करने में कोई दिक्कत नहीं होती. वी नेचुरली फील energized to do it more and more. And then as a result of that quote unquote possibility of achievement or whatever you want to use it, there is a sense of joy which arises कि देखो मैं साधना ठीक से कर पा रहा हूँ, मैं सती भी पुष्ट हो रही है, धम्म विचय भी हो रहा है, प्रज्ञा जाग रही है, वीर्य भी जाग रहा है, and that gives the internal uplift to the body and mind. And that upliftment causes happiness, a joy. वो joy जो है वो प्रीति है. और उस प्रीति को भी हम देखते हैं अनित्य है, बदलती रहती है. We see it arising, passing away, and eventually it quietens down. And when priti quietens down, it gives rise to prashabdi, which means tranquility, a very deep level of tranquility. And that deep level of tranquility makes our body also very pleasant and happy. सुख का अनुभव होता है, मन भी शांत है और शरीर में सुख हो रहा है, तो समाधि लगना बहुत सरल हो जाता है. तो सरल क्योंकि समाधि का proximate cause भी happiness कहा जाता है. So when the mind is happy and body is happy, and then samadhi becomes very easy and you can attain deep samadhis to whatever level you wish to apply yourself. And by that time when the samadhi is developed, the ability of the mind to be with whatever is and accept it is almost complete. क्यों? क्योंकि अभी तक इतनी साधना हम कर चुके हैं, इतने गहराई से कर चुके हैं, हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. सती का मतलब ही है कि हम जो भी हो रहा है उस पर जजमेंट नहीं कर रहे हैं, उस पर रिएक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग लाइक दैट, sequentially, progressively, one after other, these various mental factors keep on arising and getting strengthened. And eventually, the mind comes to a state of balance. There is no reactivity to anything whatsoever. Okay, so that is how the progress takes place. And as the progress takes place, we become more and more accessible to the ultimate dispassion and vimukti. Because उपेक्षा भावना is at the depth level, जब मन शांत है और आप कुछ भी अनुभव हो रहा होएगा, तो उस समय तो इतनी गहन समाधि में तो प्रिय अनुभव ही होने की संभावना है, लेकिन फिर भी कोई गहरा संस्कार बीच में खुल जाता है. Even after long courses it happens. Some strong sankhara arises, very deep rooted sankhara, and yet, but samadhi is so strong, practice is so strong, that the tranquility is so strong that you don't react to it. You just observe it and allow it to pass away, observe it. And so there's no reactivity, no judgment. So आपकी उपेक्षा काफी पुष्ट हो जाती है. And that is the where dispassion arises. Then naturally a feeling of nibbida will arise, a feeling of disenchantment with sensory experience. Because you see them arising, passing away, and one sees कि इसमें अगर हमने अपना सारा एनर्जी इन्वेस्ट कर दी इस तरह की खुशी में, so we'll not be able to really come out of suffering. And then there's a natural tendency of disenchantment towards the sensory pleasures, and that then moves us to dispassion and finally liberation. So these are all the progressive path of liberation is through these stages only. So everybody has to go through these stages. Of course, sometimes priti and prashabdi get clubbed together. Priti does not arise, one experiences prashabdi suddenly. So it all depends on whatever is the level of practice which one has got, and what is the extent of other sankharas which one has started with, depending on that. But sati, dhamma, vichaya are something which we will be doing, and virya will always be there. Priti, prashabdi depend upon the other mental factors which may be present in the subconscious mind. Samadhi is bound to happen and upekkha is bound to arise naturally in the process.
So these are the kind of signposts that yes, our problem meditation is progressing in the way as advised by the Buddha. Thank you. Thank you. Okay. Any other question? So we'll stop then. छोटा सा प्रश्न था। जी बोलिए। आसव में 3 मेन आसव माने जाते हैं, काम आसव, भव आसव और अविद्या आसव। जी। और अविद्या is also the source of these asavas. So can you kindly elaborate on this kind of relationship? See, the very fact that we identify avidya with, it's also termed as the T, the T also. So the idea of putting these asavas is something which is from the practical point of view of great importance. Avidya is the factor which is the most rooted factor, basic root of unwholesomeness in our life. And kama and bhava are in some sense related to that, because in every unwholesome mental factor, avidya will always be present. But when we say avidya is a separate factor, it means that the sense of delusion, that we are not able to identify things. We have a very totally distorted way of looking at things. So this is always true, even when we say greed, hatred, and delusion. In some sense, delusion is fundamental to greed and hatred also. But when you put it separately, the idea is to emphasize this is the one mental factor where delusion is prominent and greed and hatred are not so prominent. So that's why to distinguish them, because they have a different flavor. Greed has a different flavor, hatred has a different flavor, and delusion has a different flavor. Similarly, kamasav is a kind of greed. Bhavasav is a kind of identification with becoming something, which is another form of greed, but of some other kind. And some other flavor is there. Kama is generally associated with lust. And avidya is the root cause of all the problem, which means delusion, fundamental delusion being the sense of self, which is there, or asmimana, which we can call it. So in that sense, these three are distinguished from the point of view of practicality. Okay, thank you. So when we see the fetters also, 10 fetters also, we see first is Sakkaya Ditthi, then there is Vichikitsha, Shilabhata Paramars. Now Sakkaya Ditthi, these are 3 what we have created, by our own kind of instinctual behavior. We identify with the body-mind complex and certain rites and rituals and have some doubts about all kinds of thoughts. So once we give up, still the Kamachanda and Vyapada remain there still. And they get reduced, but still remain there. And then in Sagdagami, they reduce further. But it's only when Anagami that Kamachanda and Vyapada have gone, but Avidya is still there in the form of a very thin layer of delusion of sense of self, asmimana, which you call, and that goes only when one is on the last rung, post Anagami stage, when we work towards the Arhant Phal and Arvandamag. So then Avidya is the very last of the 5 fetters, which are higher fetters, the Rupraga, Aruprava, Uddhacha, and the Avidya. So the Avidya is the last one to go, really, in terms of the comprehensive and Asmimana. So Asmimana and Avidya are really strongly related to that. So when the complete breakthrough happens, when Avidya goes, Asmimana goes, and Kamaraga and Ruprava are obviously gone. They're just like
Kamachanda and Vyapada of a very subtler kind. So there's Kamachanda of a very subtle kind is Rupa Raga and Arupa Raga. So they would go first, and then Avidya and the Uddhachadi, very subtle restlessness of not having attained this complete cessation of all suffering. That remains, and then the Asmimana, the flavor of the flower remains even though flower is not there. That's how the Sutta they describe it. Thank you, Professor. So we'll stop now, and just with an announcement, I think it's time to make that. Now we'll be concluding this series on 21st of October. That's the last day of the Vasa. So we have 4 more days, and I propose to present a summary of all that we have done till now over these 4 days, so that the interconnection between various things is seen, because I started out in a kind of heuristic manner. Now there was no planning of that kind, so many things got repeated, presented, and they evolved with the discussions. So I'll try to tie them up all together and make presentations on what exactly was the objective and how we propose to achieve that objective. So from Monday to Thursday, make that presentations. So hopefully this will become clear, and we'll admit few questions in those, because we're trying to comprehensively look at the whole thing. On Thursday, that is 21st, is the Uposatha day. So we'll have a special session from 9:30 p.m. to 12 p.m. midnight, Uposatha session, in which 3 of the meditators who have been regularly attending will make presentations on the various aspects of that is mainly the 10 sannyas, Iddhipada, and the Indriyas, make presentations on them. And we'll have, of course, usual chanting and question answer session at the end of it. So specifically, I wish to inform you, and so that you can keep yourself free for participation in that Uposatha night program also. Thank you.